We are in a generation where technology has surrounded us from all sides. Our everyday life runs on the use of technology, be it in the form of an alarm clock or a table lamp. A warm and pleasant morning to one and all present here. I, Arna, and I, Naksh, are here to present today's morning assembly. Chanting and offering a prayer every morning is a part of our culture. Meditating every morning with a God's prayer gives a beautiful start to the day. So join your hands and close your eyes for the morning prayer. My life is in you, Lord, my strength is in you. My hope is in you, Lord, in you is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you. My hope is in you, Lord, in you is in you. I will praise you with all of my life, oh Lord. I will praise you with all of my strength, oh Lord. I will praise you with all of my life, oh Lord. I will praise you with all of my strength, oh Lord. With all of my life, with all of my strength, all my hope is in you, is in you. My life is my life, with all of my strength, all my hope is in you, is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you. My hope is in you, Lord, in you is in you. It reminds us of our duties for our nation, society and people. Now let us take a look at the happenings around the world. Yes, there will be news reading now, and Vikram will read English news. Good morning everyone. Greetings for the day. News make us aware what is going on in our surroundings and in the world. So here are some news for the today. International news. Sri Lankan President Vikram Singh says his government will focus on fixing economy and ending fuel shortage. Australia's forecast high inflation for another 2 years. National news. Prime Minister Narendra Modi will be guarding the 44th International Chess Olympiad today in Chennai. Kerala government will be launching e-taxi services in August. Now sports news. In Commonwealth Games 2022 opening ceremony, PV Sandhu Manpreet led Indian contingent. Now today's weather. Sunrise 5:40 am, sunset 7:16 pm, maximum temperature 28 degrees, minimum temperature 25 degrees, humidity 79%, rain chances 90%. Thank you and have a Thank you, nice day. Vikram, for updating us. Hindi is our national language, and reading Hindi news will help us and improve our command over it. And at the same time, we will be updated with current affairs. Here is Vanshika for Hindi news. नमस्कार, आज की ताजा खबर। टीएमसी ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ को आज सभी पदों से हटाया। पैसों वाले कमरों में मुझे जाने की इजाजत नहीं है, अर्पिता मुर्मू जी ने कहा। पीएम का तमिलनाडु दौरा, बारिश की शक्ल में आसमान में बरसी आफत। सोनिया गांधी ने श्रीमती इंदिरा से गलत तरीके से बात की। Vanshika, welcome you today with a warm smile and thank God for bringing new thoughts and plans. Here we have Myron Parmarthi for the thoughts of the day. Good morning everyone. Here I am for sharing one thought on technology. Technology, like an art, is a soaring exercise of a human imagination. I repeat, technology, like an art, is a soaring exercise of a human imagination. Thank you and have a nice day. सुप्रभात। आज का विचार, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग एक वरदान है, परंतु इसका दुरुपयोग एक अभिशाप है।
धन्यवाद. Thank you, Myron Parmarthi, for the wonderful talks. You all will agree that technology has become an integral part of our lives. It has changed our lives for the better and made it easier. You are right, Arna. To highlight more on the topic, here we have Rushka and Pavni. Hello Varushka. Hello Pavni. What are you doing here? I am here to share some views on technology. But I am also here to share some views related to technology. No problem Pavni. First you share, I will share it later on. Thank you Varushka. Over the years, technology has big impact on our world and daily lives. It has made our lives easier, faster, better and more fun. Technology has provided quicker ways to communicate through instant messaging apps and social media platforms. Technology has given us brand new devices like smartphones, smartwatches, tablets, etc. You're right, Pavni. With these devices, we can do things like transfer money, instantly make purchase of everything like food, delivery, groceries, furniture and more. In few years, driverless cars, robots in factories will be very common to find. Technology managed school education in different platforms like Zoom, MS Teams to continue studying during COVID. Without that, education will be dream for students like us. It's not that we use technology, but we live technology. Thank you and have a nice day. Thank you, Rushka. थैंक यू पावनी. टेक्नोलॉजी एक ऐसा साधन है जिससे हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाता है. तुमने बिल्कुल सही कहा आरना. क्या तुम्हें कोविड-19 समय याद, जब इसी टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे टीचर्स ने हमारी शिक्षा को एक क्षण भी रुकने नहीं दिया. तो चलो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ और जानते हैं पीहू और अंश के द्वारा. सुप्रभात. टेक्नोलॉजी एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हमारे कामों को बेहतर और सरल बनाए जाने का काम किया जाता है. जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही टेक्नोलॉजी के बहुत से फायदे तो कुछ नुकसान भी होते हैं. आइए जाने टेक्नोलॉजी के फायदे पीहू के द्वारा. धन्यवाद अंश. टेक्नोलॉजी के कारण कोरोना काल में ऑनलाइन स्टडी संभव हो पाई. टेक्नोलॉजी की मदद से हम घर बैठे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और दूर नजदीक के लोगों के साथ आसानी से बात कर सकते हैं. कोरोना काल में जब हम अपने घर से बाहर नहीं जा सकते थे तो टेक्नोलॉजी की मदद से जरूरत का सारा सामान घर पर मिलना संभव हो पाया. टेक्नोलॉजी के कारण कई नई खोजें संभव हुई. चिकित्सा के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी की मदद से कई खतरनाक बीमारियों का इलाज संभव हुआ है. अब हम सुनेंगे टेक्नोलॉजी के कुछ नुकसान अंश के द्वारा. धन्यवाद पीहू. आजकल लोग टेक्नोलॉजी का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बैंक फ्रॉड, वेबसाइट हैक आदि. आज हर एक इंसान टेक्नोलॉजी का इतना आदी हो चुका है कि वह घंटों मोबाइल व टीवी पर गेम खेलता रहता है, जिससे उसकी आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है. आतंकवाद से जुड़े लोग भी टेक्नोलॉजी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं. अंत में मैं यही कहूँगा कि टेक्नोलॉजी का बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए. धन्यवाद एवं शुभ दिन. For further proceedings of the assembly. Thank you, Naksh. थैंक यू आरना. अब बदल रहा है भारत, डिजिटल बन रहा है भारत. टेक्नोलॉजी की वजह से हुई सबको आसानी. डिजिटल इंडिया ने घर बैठे बैठे दूर की सबकी परेशानी. कुछ ही भावनाओं के साथ अब आपके समक्ष आ रही है तनुज.
सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक टेक्नोलॉजी। अब बदल रहा है भारत, कर रहा है विकास, जल्दी झुकाएगा कदमों पे झांको, ऐसा है मुझको विश्वास। हर गांव में बिजली पानी की समस्या हो दूर, इस देश के किसान के लिए खेती हो आसान। हर घर में एक टीवी जो गरीब के मनोरंजन का साधन, हर घर में एक मोबाइल फोन, हर घर के दूर संचार का साधन, पूरे विश्व की जानकारी देने वाला इंटरनेट, जिससे विद्यार्थी को मिले ज्ञान, बनाए उन्हें प्रतिभा। हर क्षेत्र में हो भारत आगे, क्योंकि पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलो मिलकर बना इस देश को डिजिटल इंडिया। धन्यवाद। धन्यवाद तनुज। The modern age is the age of technology and we all have become used to it. We cannot escape technology as it has improved the qualities of our life. Now, acting group of our class is here to present some acts on technology. Give me some food to eat. Yes, my dear, come and have it. Oh no, this food is so boring. I like to eat something very tasty and delicious. Oh no, what I should cook for my child? Idea. Let me search some delicious recipe on YouTube. This one I should try. It smells so good. I hope Jack will like it. It smells so good. What have you cooked, Mama? Come, dear, and have it. Wow, it is very tasty and yummy. I like it very much, Mom. Thank you, Mom. Thanks to technology. Yes, sir. How can I help you? Sir, can you please tell me this address? No idea, sir. Now what to do? Why are you so worried? Google Map will guide you the right location. Google Map? Yes, Google Map. Just enter the address and it will map out the route to your destination. Yes, I got it. Thank you, sir. Thanks to technology.
It's all around you. It's all around me. Now we come to the end of today's morning assembly. Thank you all for being wonderful audience.